Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. I've got a hijab setting video for you today. This will be in Urdu and in English. यहाँ पे पहले मैंने हिजाब की सेटिंग कर रही हूँ एंड ये एक सिंपल हिजाब है जो मैं कर रही हूँ जिसका कोई वॉल्यूम वगैरह नहीं किया। तो यहाँ पे पहले मैं टिक्का लगा रही हूँ, सिर्फ इसने एक अंडर कैप लगाया हुआ है एंड यहाँ पे मैं सेफ्टी पिन लगा के इसको फिक्स कर दूँगी एंड देन एक स्ट्रेट पिन यूज़ करूँगी पीछे खींच के एंड देन इसकी सेट कर दूँगी कि आगे ऑब्वियसली टिक्का ना आ जाए। So I'm using a safety pin just to secure the tikka. I know you can see it's a little bit low, so what I do is I tend to use a straight pin and then I'm just going to weave that through the chain so that it doesn't keep moving forward. So normally with a bride, they normally have their own matching scarf and it tends to be a lot longer than the regular ones. Here I am just using a regular chiffon standard size hijab. If I can get hold of the longer ones, I will show you how I would set those because I use that for extra volume and things like that. So I'm just going to go through this for you now. So normally जो मेरी ब्राइड होती है उसका लंबा स्कार्फ होता है, मैचिंग होता है एंड उससे मैं काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी कर लेती हूँ। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टाइल में मैं सिर्फ आपको एक सिंपल हिजाब स्टाइलिंग दिखा रही हूँ जहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं ऐड किया एंड कुछ लोगों को ऐसे पसंद होता है, सो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। नेकलेस पहले लगा लिया है, फिर हम स्कार्फ लगाएंगे। So my scarf is, like I said, a chiffon hijab. I'm just going to add this on and I'm going to fold the front forward. Now there is a bit of a wet patch on it, please ignore that. I actually ironed it and my iron leaked, so it's a bit wet and I didn't have time to kind of like wait for it and stuff. So all I'm going to do is fold this over and then I'm going to pin it underneath her chin. I normally get my bride to do her own pinning because one, it's safer, secondly I think they can get it a lot tighter. So I'm just going over the tikka, adjusting it and making sure I frame her face nicely. So यहाँ पे मैंने फोल्ड कर दिया, आगे से थोड़ा सा डबल कर दिया एंड देन आगे से हम इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके तो नीचे पिन लगा देंगे। पिन नॉर्मली अपनी ब्राइड को ही बोल देती हूँ लगाने के लिए क्योंकि एक उसके लिए सेफ़ होता है, मुझे डर लगता है उसको लग ना जाए एंड सेकेंडली वो खुद ज़्यादा टाइट कर लेती है, तो यहाँ पे ये खुद अपना पिन कर लेगी। थोड़ा सा स्कार्फ में जब आप देखेंगे थोड़ा सा निशान नज़र आएगा, वो थोड़ा सा वेट हो गया था जब मैंने इस्त्री की थी, तो उसको इग्नोर कर दें, मेरे पास टाइम नहीं था कि उसको सुखाती रहूँ या फिर दोबारा करूँ, तो मैंने ऐसे ही कर दिया था। So you can adjust the side. So there's a few different ways of doing this, like I said. So what I'm doing is I'm going to take one side, I'm literally just going to pleat it a little bit from the ends, and when you bring it over, automatically the pleats kind of like just are there. So you can adjust this now, and I'm just going to take it to this side and I'm just going to add a straight pin there. So this just gives a little bit of volume. So यहाँ पे मैंने एक साइड से बस ले गई हूँ। जब आप प्लीटें लेके जाते हो साइड से करते हो तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट पिन लगा दूँगी एंड प्लीटें आपकी खुद ही आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो बेटा ना ये कवर हो जाएगा स्कार्फ के साथ, तो यहाँ पे बस मैं स्ट्रेट पिन लगा रही हूँ। जो फ्रंट स्टाइलिंग है बेसिकली उसका ये है कि इसको मैं लेके आऊँगी। अब यहाँ पे आप नेक कवरेज दे सकते हैं या इसको बिल्कुल आप टाइट कर सकते हैं, या नॉर्मली मैं आगे जो टॉप होता है उसके अंदर दे देती हूँ एंड देन इसके ऊपर नेकलेस आ जाएगा। यहाँ पे ऑब्वियसली इसने दुल्हन का जोड़ा नहीं पहना हुआ, लेकिन बस मैं स्टाइलिंग दिखा रही हूँ। सो आप देखें कि यहाँ साइड से जब आप पकड़ लेते हो तो प्लीटें खुद ब खुद ही आ जाती हैं। So all I'm doing is pleating it very, very roughly, and then when you bring it round, the pleats are automatically there for you, and then I just adjust them. It's up to you how tight and how loose you want to keep this. Now, if you wanted to take this all the way across and then around again, you would adjust your scarf initially. So you would have had one side slightly shorter, one slightly longer. So I normally do that before I start pinning and figure out, whether I've got the right length or not. But for this particular one, I'm just showing you how I would do this with a slightly shorter side. So नॉर्मली यहाँ से अगर आप इसको फिर दोबारा लेके जाना चाहते हैं, फिर आप एक साइड शॉर्ट रखेंगे, एक साइड लंबी रखेंगे, तो इस हिसाब से करेंगे। लेकिन इस दफ़ा मैंने आपको बस सोचा कि ये तरीका दिखा देती हूँ जहाँ पे एक साइड शॉर्ट होती है। तो यहाँ पे इसको एडजस्ट करके वगैरह पिने लगा दूँगी। बस प्लीटें वगैरह बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होनी चाहिए, और ये जो साइड है ये आपकी कवर हो जाएगी। सो यहाँ पे अंदर वाली साइड पे एक स्ट्रेट पिन लग जाएगी। So I'm just adjusting the pleats a little bit, and then I'm going to add a straight pin on the inside where you can see I'm holding it. So depending on how much material you need for the neck coverage, for this particular look it was absolutely fine. If I needed more, obviously I would loosen the front a little bit and bring that down. So here I'm just figuring out what I want to do with this bit, so I'm just going to twist it and actually pin it, but I'm going to get the necklace up first.
So the necklace I never tend to take all the way up to the high point of the neck because it actually looks a little bit suffocating, especially when you've got your hijab going around your neck. If you're not having any neck coverage, then it looks fine, but I normally adjust that accordingly. So जो नेकलेस है मैं उसको हमेशा ऊपर तक नहीं लेके जाती. अगर आपने नेक कवरिंग की हुई है तो थोड़ा सा कई दफ़ा सफोकेटिंग लगता है, तो थोड़ा सा मैं नेकलेस नीचे ही रखती हूँ. तो ये जो साइड है इसको मैं यहाँ पे ऐसे पिन कर दूँगी कि सामने से सही लगेगा. एंड जब आप दुपट्टा सेटिंग करेंगे तो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, तो इसको अंडर साइड पे मैं ऐसे पिन कर दूँगी. So all I've done is twisted it, and on the underside I'm just going to be pinning this to that material at the front. Like I said, there are so many variations, so many different ways I do this, but this is just one that I'm showing you. There's many more that I'm going to be showing you inshallah as well. So once that is on, you can go on with your scarf. So you just get the center point of the scarf, and I'm just going to sit that onto her head. तो यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया एंड इसके सर पे लगा दिया दुपट्टा. एंड यहाँ पे अभी मैं देखूँगी कि कैसे हमने पिन करना है, एक साइड फॉरवर्ड या दोनों साइड फॉरवर्ड, या काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को अच्छा लगता है कि बैक पे हो एंड उसका काफ़ी मूवमेंट कम होती है कि मतलब सेटिंग उसकी सही हो. तो यहाँ पे एक मैं पिन लगा दूँगी. So I'm just going to pin it to normally her top, her bridal top here. So normally with hijab, sometimes it looks nicer when the dupatta actually sits quite tightly, but that doesn't mean there's not much movement left, and you have to move with your whole body and not your neck. But from the top of here, what I'm going to do is I'm going to add a safety pin. So I normally add a safety pin on my normal brides as well when they've got the hair showing. So I add a safety pin, and then what I normally do is I use a grip to grip it to the hair, but obviously we can't do that here, so I'm going to add a safety pin, and then I'm going to add some straight pins here instead of the grips. So I've got my safety pin in, and then I'm going to use my straight pins and weave them in and out of the scarf and the safety pin, and then this will hopefully hold your scarf there. So यहाँ पे मैंने एक सेफ्टी पिन लगाया है. नॉर्मली यहाँ पे मैं ग्रिप्स लगा देती हूँ. यहाँ पे ग्रिप्स तो इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि मटेरियल है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो स्ट्रेट पिन्स होती हैं हिजाब की वो यूज़ करें. तो वो अंदर बाहर करके ना स्कार्फ, जो नीचे वाला स्कार्फ है एंड जो सेफ्टी पिन है उसके अंदर बाहर करके तो 2-3 लगा देती हूँ, एंड ये उसको होल्ड कर लेंगे. It's a bit difficult to do this bit sometimes because you can't get through all the material sometimes, so just take your time when you do this. So once this bit is done, you can then pin it to the side. What I've done is I've decided to bring both sides slightly forward, folded the sides here, and what I do is when I fold it up, if I've pleated the scarf, I pin the actual scarf pleats first, and then I will, once that's pinned, then I will actually pin it to the actual the top. So अगर आपने ऐसे प्लीट्स करके करनी है तो पहले जो प्लीटें आपने कर ली उनको पहले पिन कर लें कि वो हिले नहीं, एंड देन टॉप पे मैं इसको पिन कर देती हूँ. सो ये एक बहुत ही सिंपल सा हिजाब स्टाइलिंग है, लेकिन मैंने कहा आपको दिखा दूँ. आगे इंशाल्लाह और भी आपको हिजाब स्टाइलिंग्स लेके आऊँगी जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है. अगर आई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, लाइक करना, शेयर करना. इंशाल्लाह और वीडियोस आपके लिए जल्दी लेके आया करूँगी. अल्लाह हाफ़िज़.